कोई सवाल नहीं है? Great. Okay. So yesterday we took a brief introduction of what we mean by machine learning, and we talked about one of its prolific types, that's supervised learning. So from supervised learning we tend to talk about unsupervised learning as well, and then we also tend to talk about reinforcement learning. So सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में हमने ये कहा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग तब होती है जब हमारे पास इनपुट्स और राइट आंसर्स दोनों मौजूद होते हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन व्हाट वी नो अबाउट द डेटा, बेस्ड ऑन व्हाट इज द करेक्ट आउटकम ऑफ द क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर जैसे हम ट्यूमर साइज और एज की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि क्या ये केस जो है वो मैलिग्नेंसी का केस है या नहीं, राइट? इज दिस ट्यूमर मैलिग्नेंट और बेनाइन, राइट? सो उस केस में फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये एक क्लासिफिकेशन बाउंड्री हम बना रहे थे, लेकिन ये दोनों डेटा सेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो हमने रेड प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये हमने ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, राइट? और ये बात हमें पहले से मालूम है कि ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, राइट? So based on historical data, we know that this is a particular tumor which was malignant, and this is a particular tumor which was not malignant, right? जब हम unsupervised learning की बात करते हैं, तो unsupervised learning के अंदर जो बुनियादी फर्क हमारे सामने आता है वो ये है कि हमारा डेटा लेबल्ड नहीं होता। Now what do we mean by that? कि हमारा डेटा लेबल्ड नहीं होता। अगर हम इस डेटा सेट को लेबल्ड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें दुरुस्त जवाब का पता है, और दुरुस्त जवाब क्या है कि आया ये मैलिग्नेंट है या नहीं, राइट? अगर हमें ये ना मालूम हो कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं है, या ये मैलिग्नेंसी का केस है या नहीं है, या हमारे पास करेक्ट आंसर है क्या, राइट? वी विल कॉल दिस डेटा एज अनलेबल्ड डेटा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं कि हमें कुछ डेटा चाहिए, कुछ मेडिकल इमेजेस चाहिए या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? हम उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके, कुछ एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है? एंड सपोज दे एग्री टू गिव यू सम डेटा। फॉर एग्जांपल वो आपको एक्सरेज का डेटा देते हैं, राइट? एक्सरे इज अ वेरी कॉमन थिंग, आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस शायद किया होगा। सो अब एक्सरेज का डेटा जब वो आपको देते हैं तो देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्किंग कि आप ये डेटा क्यों ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये जानना चाहते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनके लंग्स में क्या फर्क होता है। आप एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के तौर पे इसको मॉडल करके प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि आया ये जो लंग है ये स्मोक इन्फेक्टेड है या नहीं, राइट? सो आप जो डेटा लेंगे आपको कैसे पता होगा कि ये स्मोक इन्फेक्टेड है या नहीं है? तो अब आप पहली चीज ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो लेबल्ड है। लेबल्ड होने का मतलब क्या है कि हर इमेज के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी कि ये लंग एक ऐसे पर्सन का, ये इमेज एक ऐसे पर्सन के लंग का है जो सिगरेट नहीं पीता, और ये इमेज एक ऐसे पर्सन के लंग का है जो सिगरेट पीता है, राइट? So you will have labeled data. अगर आपको लेबल्ड डेटा नहीं मिलता, आपको कहते हैं कि हमारे पास इमेजेस तो हैं लेकिन हमने कभी किसी से पूछा नहीं है, हमने ये इंफॉर्मेशन कभी उसके बारे में मेंटेन नहीं की। Now you will get the X-ray images, but it will not be labeled. तो अब आपने इनके साथ क्या करना है? कौन सा एक्सरे इमेज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें क्या चीज नजर आ रही है, इसके लिए आपको फिर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो आपको देख के बताएगा, एक रेडियोलॉजिस्ट देख के बताएगा, ओके दिस लाइक लंग इज शोइंग दीस काइंड ऑफ सिम्पटम्स एंड दिस, और आपको उसको लेबल करना पड़ेगा, राइट? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग एंड नॉट लेबलिंग, राइट? सो अब ये जो दूसरा केस है जब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं, दिस इज द सेकंड केस दैट यू सी हियर, राइट? यहाँ पे जो डेटा नजर आ रहा है आपको, इस डेटा में आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर ये ट्यूमर्स का डेटा है, आप कहते हैं जी ओके हमारे पास ट्यूमर साइज भी है, हमारे पास एज भी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इनमें से कौन से ट्यूमर्स मैलिग्नेंट हैं और कौन से ट्यूमर्स मैलिग्नेंट नहीं है।
ये हमें मालूम नहीं है, राइट? सिंपली सेइंग दैट डेटा इज नॉट लेबल्ड। अब अगर डेटा, अब यहाँ चूंकि डेटा लेबल्ड था तो हमने कहा देखें जी ये वाले काफी दूर है केसेस कंपेयर टू दीज केसेस, तो हम आसानी से इनके दरमियान एक क्लासिफिकेशन बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा एल्गोरिथम ये चीज लर्न कर सकता है, उसको ट्रू आंसर्स बता देंगे तो इनके दरमियान एक क्लासिफिकेशन बाउंड्री लर्न कर लेगा और नए केसेस को उसी के मुताबिक वो मैलिग्नेंट या नॉट मैलिग्नेंट या बेनाइन केस के अंदर क्लासिफाई कर देगा। यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रू आंसर्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ भी डेटा के साथ कुछ ना कुछ करना है, और वो जो कुछ ना कुछ हम इस केस में कर रहे हैं हम इसको यूजुअली कहते हैं क्लस्टरिंग, कि आपको ये नहीं मालूम कि ये जो ग्रुप ऑफ डेटा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी हमें यूं लगता है कि ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक अलग ग्रुप नजर आते हैं, राइट? और ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक अलग ग्रुप नजर आते हैं। बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल इस केस में कहते हैं कि जरा डिस्टेंस पर नजर आ रहे हैं, तो हमें लगता है जैसे 4 बंदे इधर इकट्ठे खड़े हैं और 4 बंदे इधर इकट्ठे खड़े हैं। ये 4 बंदे किस नजरिए के हामिल हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। और ये 4 बंदे यहाँ सोच के क्या सोच के खड़े हैं और क्या करना चाह रहे हैं, इनकी क्या सोच है, ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ देखकर विजुअल इंस्पेक्शन से फॉर एग्जांपल ये पता चल रहा है यार मुझे लगता है ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। यहाँ जो कि हमें लेबल्स का पता था तो हम कह सकते थे कि ये नॉन मैलिग्नेंट या बेनाइन केसेस हैं और ये मैलिग्नेंट केसेस हैं। यहाँ चूंकि हमें ये मालूम नहीं है तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये एक अलग ग्रुप लगता है और ये एक अलग ग्रुप लगता है। लेकिन क्या ये वाकई अलग ग्रुप है, या ये अगर अलग ग्रुप्स हैं तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, राइट? सो अनलेबल्ड डेटा होगा तो हम जो काम कर रहे होंगे उसको आमतौर पे क्लस्टरिंग कहते हैं, कि आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ग्रुप्स ऑफ डेटा पॉइंट्स जो आपको लगता है कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप कहते हैं कि ये देखें ये पॉइंट्स एक दूसरे के काफी करीब हैं तो ये मिलते जुलते पॉइंट्स लगते हैं, आई कॉल इट वन क्लस्टर। ये डेटा पॉइंट्स भी एक दूसरे के ज्यादा करीब है, ये भी मिलते जुलते लगते हैं, आई कॉल इट एन अदर क्लस्टर। इट कुड बी कि अगर डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो तो आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा हो या कम हो, इट डिपेंड्स ऑन द वे डेटा इज स्प्रेड आउट, राइट? सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वही चीज हमारे पास अगर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में तो वी कॉल इट फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग, राइट? व्हाई क्लस्टरिंग? बिकॉज़ वी डोंट नो द ट्रू आंसर्स। वी विल टॉक अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लेटर। एक लाइक क्लस्टरिंग की, अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक बहुत पॉपुलर टेक्निक क्लस्टरिंग है जिसको भी हमने डिस्कस किया। तो क्लस्टरिंग की एक बहुत ही अमूमी मिसाल जिसके साथ आपका रोज पाला पड़ता है वो है, मिसाल के तौर पे आप जैसे गूगल न्यूज़ को देखते हैं, आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल न्यूज़ ऑटोमेटिकली दस्तयाब होती है हर वक्त, ठीक है? अब गूगल न्यूज़ आपके लिए एक काम जो रोज कर रहा है दैट इज क्लस्टरिंग ऑफ द न्यूज़, राइट? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक तो जनरली ये होता है कि जिस किस्म की न्यूज़ आप ज़्यादा देखते हैं उसी किस्म की न्यूज़ आपकी रिकमेंडेशंस के अंदर आ रही होती है, सो यू टेंड टू सी दोस काइंड ऑफ न्यूज़ मोर, राइट? सेकंड, एक ही टाइप की स्टोरी मल्टीपल लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे चिड़ियाघर में जो है हसीन जो है उसकी तबीयत खराब है तो ये खबर जो है वो मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है, राइट? जब मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप ये चीज़ देखते हैं या मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर आप ये चीज़ देखते हैं, गूगल न्यूज़ क्या करेगा? गूगल न्यूज़ ये देखेगा कि बेस्ड ऑन सिमिलर टर्म्स वो मुख्तलिफ न्यूज़ आर्टिकल्स को इकट्ठा करके एक क्लस्टर बना देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो लाइक दिस इज द केस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पांडा। अ जायंट पांडा गिव्स बर्थ टू rare twin cubs at Japan's oldest zoo। तो फर्ज करें कि किसी दिन ये न्यूज़ आई कि a giant panda gives birth to rare twin cubs at Japan's oldest zoo, right? Now this news story could be reported by many different sources. Now you see the similar story coming from USA Today, similar story coming from CBS News, WHBL News, the New York Times and People, right? And then you also see viewful coverage, right? That means that if you click on this you might get more news stories about that. Now how has this clustering happened?
Google does not really know what the news is about. It just knows, okay, like this news is talking about panda, this news is also talking about panda, this news is also talking about pandas, and so on and so forth. And then there is this term twin, zoo, right? जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज उसको मिलती जाएगी उतना ज्यादा इस बात का इम्कान बढ़ता जाएगा कि ये एक ही किस्म की न्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो what Google will do is it will cluster all those news together and will show it to you in a particular case. Okay, this news story relates to the same event from multiple sources, right? So if you ever, आप लोग कभी अपने फोन में Google News को देखते हैं? Like it's just with one slide you can retrieve that, so you can like observe its behavior as well, the way it like यानी वो कैसी न्यूज स्टोरीज पॉपुलेट करेगा, जिस किस्म की न्यूज स्टोरीज में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं आप उसको बता भी सकते हैं I'm not interested in this, I'm interested in this, right? So उस किस्म की न्यूज स्टोरीज आपके सामने ज़्यादा आ रही होंगी. And then the next thing is कि आप एक न्यूज स्टोरी पर जाते हैं तो उसका एक पूरा क्लस्टर भी आपके सामने यूजुअली वो, क्योंकि गूगल खुद न्यूज वेबसाइट नहीं है, सो मल्टीपल सोर्सेज का डेटा इकट्ठा करके आपको एक जगह पे दिखा रहा होता है. Okay, another example of clustering or unsupervised learning in this case is analyzing, for example, DNA microarrays. आप जानते हैं बेसिक बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि लाइक हमारी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक बेस लेवल पे जाके जो चीज़ लाइक रोल प्ले कर रही है उसको कहते हैं डीएनए, राइट? और जो डीएनए है फिर डीएनए के अंदर फर्दर आपको जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, राइट? हर एक फर्ज करें ये जो एक फॉर एग्जांपल ये डेटा जो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड है, यू सीइंग लाइक माइक्रो एलिमेंट्स हियर, राइट? So each column, for example, here is representing an individual's DNA. For example, मेरे तमाम DNAs का की information एक column के अंदर listed है, and then next person. So for example, हम ये कहते हैं ये तकरीबन 1000 columns हैं यहाँ पे, और 1000 columns में 1000 different लोगों के DNAs की information listed है, right? Then every person has, for example, हम ये कहते हैं कि ये जो यहाँ rows हैं, ये rows की तादाद तकरीबन 500 है, फर्ज करें. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास हर इंडिविजुअल के 500 के बारे में 500 ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है. अब इसमें से एक डीएनए मुमकिन है कि जो बता रहा हो कि आपकी आई का कलर क्या होगा, ठीक है. एक डीएनए मुमकिन है ये बता रहा हो कि आपकी हाइट जो है वो कितनी होगी, और हाउ यू टॉल और शॉर्ट, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू नो वी इनहेरिट दीस थिंग्स फ्रॉम आवर प्रेडिसेसर्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम ग्रैंडपेरेंट्स, एंड लाइक जनरेशनली जो डीएनए हैं हमारे वो इसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. उसमें कॉमनैलिटीज भी आ रही होती हैं, म्यूटेशंस भी आ रही होती हैं. तो डीएनए से हमें लाइक इफ फॉर एग्जांपल डीएनए की बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे केसेस के अंदर फोरेंसिक एनालिसिस होता है, ठीक है, मर्डर के केसेस हैं, लाइक सो एक बाल के अंदर से भी हम वो डीएनए निकाल के इस चीज़ को एनालाइज कर देते हैं कि whether like this is something that is related to someone in some way or not, right? Because you find the DNA samples there as well. अब यहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, अगेन विदाउट नोइंग दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन एग्जिबिट्स, ठीक है. आजकल ये भी कहा जाता है कि डीएनए से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि आप कुछ खास किस्म की चीज़ें खाने में पीने में पसंद करते हैं या नहीं करते. वैसे जनरली बायोलॉजी के अंदर बेसिक थ्योरी ये कहती है कि शायद डीएनए का इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आजकल ये ताल्लुक भी स्टैब्लिश किया जा रहा है. तो कुछ फल और कुछ सब्जियां आप लोग पसंद करते होंगे और कुछ नापसंद करते होंगे. बैगन किस किस को पसंद है? वाह, ओके. बंद गोभी पका के खाना किसको पसंद है? 3 लोग बंद गोभी खाने वाले हैं. और फूल गोभी खाने वाले भी मौजूद है. ओके. और एक फल हमारे यहाँ आता है जिसे हम आमतौर पर कहते हैं जापानी फल. जापानी फल किसे पसंद है? और कोई ऐसा फल जो जिसको आप सख्त ना पसंद करते हैं? नहीं, ये नहीं खाया. एनी फ्रूट?
जो आपका नाम होता है। हो सकता है किसी को ये भी सोचना पड़े कि अच्छा कौन सा स्ट्रॉबेरी। Is there anybody who eats no fruit? So like my elder son eats no fruit. Not one, and he doesn't eat a single fruit. So, but like historically, biologically ये चीज़ इसी तरीके से ली जाती है कि नहीं DNA का डायरेक्ट ताल्लुक इस किस्म की लाइक्स और डिसलाइक्स से नहीं होता, लेकिन आजकल ये डिबेट की जाती है। So maybe next time अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये सब्जी क्यों नहीं खा रहे, तो आप कह सकते हैं अम्मा मैं क्या करूँ, मेरे DNA का मसला है। और अम्मा जूता उतार के ये कहे कि तेरे DNA बखरे आए हैं। I am your mama, eat this. He is your dad, he eats this. Your grandparents eat this. So what the hell are your DNA made of? So like that one chappal can help a great deal in mutating your DNA. Okay, so like based on like the information that you get here, you can again take it as a clustering question that based on similar characteristics, you say, okay, these individuals look to be the similar, right? Now, what is similarity? Without going into that detail, we just say, okay, they seem to have the same characteristics. So based on like DNA information, we could be categorizing people like, okay, these are type 1 people, type 2 people, type 3 people, and we don't specifically know them as type को क्या कहेंगे. But like we just say that, okay, they seem to be more similar, right? And they seem to form a kind of group here, based on their DNA characteristics. Okay, similarly, for example, Andrew and his team at deeplearning.ai clusters the students, the learners as well. तो उनके पास जो मुख्तलिफ किस्म के learner आ रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ motivations के साथ आते हैं. So like they cluster them based on like the information that they have about students. So there could be some people who are there to learn these things because they want to like grow their skills and knowledge about the domain. There can also be kind of people, a cluster of people which are basically there to like stay updated about AI. There could also be kind of people who want to develop a career into AI, and there could also be a unique learner which has some kind of other motivation, right? Whatever that motivation is. So like in clustering, they just want to like cluster the learners based on their different characteristics, and they use this data to like refine their products in some way so that they can make it more appealing. Because जिस किस्म की motivation से कोई user किसी content को take up करता है, उस content को उसके मुताबिक ट्यून कर देना इस बात के इम्कान को बढ़ाता है कि वो content ज़्यादा useful और ज़्यादा engaging साबित होगा. Okay. So having discussed supervised learning, जिसमें हमारे पास डेटा लेबल्ड होता है और हम उस लेबल्ड डेटा की बेसिस के ऊपर, यानी हम ये कहते हैं कि हमें दुरुस्त जवाब का पता होता है और उसकी बेसिस के ऊपर हम उस जवाब को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हमने अपनी थ्योरी को फिर एक्सपैंड किया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, और स्पेसिफिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने जिस चीज़ की बात की उसका नाम है क्लस्टरिंग. तो हमने क्लस्टरिंग की बात की कि हमें ट्रू आंसर्स का मान पता नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज ऑफ द इनपुट we try to group data into different clusters. That's what clustering is, right? So in unsupervised learning, data only comes with inputs X, but not output labels Y. As I said earlier, that this is the common variable that we will always be using for inputs. X will be representing the inputs, and Y will be representing the outputs, right? So unsupervised learning में हमारे पास X या XS मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं. In that case, we will be calling it X1, X2, X3. So हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल होंगी लेकिन आउटपुट लेबल्स मालूम नहीं होंगे, right? Algorithm has to find the structure in the data, और algorithm का काम क्या है कि वो based on some inputs ये decide कर सके कि अच्छा ये एक अलग ग्रुप लगता है, ये एक अलग ग्रुप लगता है. It depends on algorithm and data कि आपकी outcomes क्या होती हैं. हो सकता है कि वो ये कहे कि सारा एक ही ग्रुप है, और हो सकता है कि नहीं, ये तो 10 different groups. So like it depends on the kind of data you have, the spread of the data that you have, and also the kind of algorithm that you are using to
learn the clustering out of that. Okay. So one common technique that we have in, like one common type of problem addressing that we have in unsupervised learning is called clustering, right? But clustering is not the only thing that is done in unsupervised learning. There are other things, that is, for example, dimensionality reduction, right? So like there is one technique specifically called PCA, principal component analysis. So dimensionality reduction में हम क्या करते हैं? We compress data using fewer numbers, right? We compress data using. अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे sometimes हमारे पास किसी डेटा के अंदर redundant information होती है, ठीक है? For example, there is a data set which is storing information about people like us. It stores the information about like height, so like मेरी height और आपकी height उसके अंदर stored है, and also weight, मेरा और आपका वजन कितना है ये भी उस डेटा सेट के अंदर stored है. और उस डेटा सेट का पर्पस ये है कि वो हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में अंदाजा लगाना चाहता है कि हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है, राइट? अब ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके बाद फर्स्ट करें उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट भी है, या हम उसमें एक और एट्रीब्यूट डाल लेते हैं, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. आपको पता है यूजुअली वो एक हाइट और वेट की रेशियो होती है, ठीक है? सो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हाइट और वेट दो कॉलम्स अलग इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप BMI या बॉडी मास इंडेक्स का एक ही कॉलम इंडिकेट यूज कर लें, बिकॉज दैट इज टेलिंग कि आपकी हाइट के मुकाबले में आपका वजन कितना है, राइट? सो यू नो दैट इफ यू हैव डिफरेंट हाइट योर वेट शुड बी डिफरेंट. अगर आपकी हाइट टॉल है तो आप थोड़ा ज्यादा वजन टॉलरेट कर सकते हैं, आपको सेहतमंद करार दिया जाएगा क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है. बट इफ यू आर शॉर्ट देन योर वेट शुड बी अकॉर्डिंगली less or more appropriate, right? So अब यहाँ पे हम ये दो कॉलम्स डेटा में से निकाल के एक कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को ज्यादा बेहतर सर्व कर देगा और हमारे डेटा सेट का साइज भी छोटा हो जाएगा. So that's what an example, a very simple example of compression is, right? कि आप ऐसे एट्रीब्यूट्स फाइंड करें जो आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक अच्छा इफेक्ट दे रहे हो और आपको उनकी बजाय आप उसे एक एट्रीब्यूट को अगर इस्तेमाल कर लें तो दैट कैन बी मोर हैंडी काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ कंप्रेशन दैट इज पॉसिबल इन लेमैन्स टर्म्स. So like dimensionality reduction is like one technique, and then another one is called anomaly detection. Anomaly detection of late has been very popular in unsupervised learning. Now what is anomaly detection? Like any kind of unusual or abnormal behavior that could be in a financial transaction. आप जानते हैं कि आजकल सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई हैं, तो अब जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, और बैंकिंग चैनल्स के लिए या फाइनेंशियल चैनल्स के लिए ये हमेशा एक चैलेंज रहता है कि वो अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, राइट? कभी कभार हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है कि फलां बैंक के साथ फलां मसला हो गया, उनका इतना जो था फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया, या इतनी फेक ट्रांजैक्शंस वहाँ से हो गई, एंड दे हैड टू बेयर दिस मच ऑफ लॉस, राइट? सो एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस. सो जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही होती है उस तमाम ट्रांजैक्शन डेटा को मॉनिटर करना और उसमें से ऐसी ट्रांजैक्शंस को फ्लैग आउट करना जो कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं लग रही, दिस इज a great challenge and a problem of great interest to all the financial institutions, right? इसके अलावा anomaly detection की मिसाल प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर है बहुत सारी. मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है जो मोबाइल फोन्स बनाती है, राइट? एंड एज यू नो कि कहीं कोई आइसक्रीम बन रही है, बिस्किट बन रहे हैं, लाइक कोई प्लास्टिक की प्रोडक्ट बन रही है, कोई भी चीज़ बन रही है, तो आप देखते हैं कि जो उसके फाइनल कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं तो वहाँ पे आमतौर पे लोग खड़े होते हैं उनको विजुअली इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें से जो चीज़ें ठीक नहीं होती उनको उठा के. So that's an example of anomaly detection which is being done manually, and now the systems are trained to do it automatically instead of like using humans to do this.
robots are doing it, or like simple visual inspection is simply marking something and that thing is like disassociated from the main packaging जब उसको final packaging के लिए हमें भेजा जाता है. So anomaly detection in many domains is playing a very vital role. We will talk about anomaly detection in like last course of the specialization as well. So like unsupervised learning में तीन main चीजें main like clustering, dimensionality reduction and anomaly detection. So ये एक छोटा सा कह लें कि कंसोलिडेशन क्विज है, वो जस्ट टेलिंग अस कि हम चीज़ों को सुपरवाइज्ड लर्निंग के तौर पे कब देखते हैं और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के तौर पे कब देखते हैं. So one of the following examples, which would you address using an unsupervised learning algorithm? So there are 4 options and you need to figure out the ones that you will be addressing using unsupervised learning. So the first one is, given email labeled as spam, not spam, learn a spam filter. आपको कुछ डेटा दिया गया है ईमेल्स का और वो लेबल्ड डेटा है और लेबल्स क्या है उसमें कि ये स्पैम है या नहीं है, और आपने लर्न क्या करना है, आपने एक स्पैम फिल्टर बनाना है उसकी बेसिस के ऊपर. तो क्या ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मिसाल है? No, this is an example of supervised learning because in the given data we know the true labels. Okay. The second one is, given a set of news articles found on the web, group them into sets of articles about the same story. Is it an example of unsupervised learning? Yes, because we don't know what is the story that we are going to group it into. We just know, okay, they are similar, group them. They are similar, group them. But what are they about? That's not already set. ये हमारे लिए पहले से तय नहीं है. So it's unlabeled data, so it is an unsupervised learning problem. Given a database of customer data, customers का data है हमारे पास, automatically discover market segments and group customers into different market segments. आप यूँ कह लें सादा लफ्जों में कि हमारे पास किस किस किस्म के customers हैं, right? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी ग्रोसरी स्टोर है या कोई मार्केट है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स आते हैं और हमारे पास कस्टमर्स के बारे में सेलिंग के बारे में मुख्तलिफ किस्म का डेटा अवेलेबल हो सकता है और हम उनको सेगमेंट करना चाहते हैं कि हम मिसाल के तौर पे वी कुड हैव अ बल्क परचेजर, राइट, वी कुड हैव काइंड ऑफ लाइक रिटेल परचेजर जिसने छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, ठीक है. We could have a purchaser जो हमेशा for example car oriented या like एक खास किस्म की प्रोडक्ट्स हमसे लेके जाता है, right? We could have a customer जिसको आदत है कि वो महीने में 6 बार या 7 बार आता है. We could have a customer जो महीने में 1 ही बार आता है, and we could have a customer जो usually daily आता है थोड़ी थोड़ी सी चीजें लेके जाता है, right? So based on the customer data, we want to like do some kind of market segmentation. कि हमारे पास किस किस्म के कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस